Good morning, students. How are you, all of you? Okay. Very good, very good. As we finished our grammar articles, three articles, as I explained you, a, and the. These are called articles. When to use and how to use, we learned in our last class. Today, we are going to learn singular and plural in grammar. Before moving to singular and plural, to repeat because in grammar, noun is a base. Noun is a base. It starts with a noun. Exactly the noun means the noun that names can be a person, place, animal, or thing is called a noun. Means singular noun. Singular means single. As look at in the picture also given friend, single, the girl is there, house, giraffe, stone, whatever it is, pencil, book, pen, bag, shoe. Okay. Now you see, these are all nouns which represents the name of a person, whether it can be a person, can be an animal, can be a thing, and can be a place. Okay. Now in this picture also, I want to tell you, see, here friend, it comes under a person. House, it comes under a place. Giraffe come under a animal. Stone is a thing. All four. So they are called nouns. Now you might be thinking that ma'am said today we are going to learn something about singular and plural. Now what she is explaining. Now you see, this is the basic. So that's why before moving to a singular and plural, I inform you these are the nouns. But they are singular noun. Singular means single, one. Understood? Singular means it's a single, one. In the picture also you can see. And the second thing, the noun that names more than one. More than one means maybe two, three, four, many more. But it should be more than one. What? Noun. The noun that names more than one. We can say many. When in a number noun, we are unable to count. Like suppose grass, we can't count. So that is a countable noun. Okay, we can't count. Here the noun that names more than one person, place, animal, or thing. That is called a plural noun. That is a plural noun. Singular noun means single thing, one person, one place, one animal. That is a singular noun. Plural noun means more than one person, more than one place, more than one animal or things. That is called a plural. And in the plural nouns, there are so many ways to convert a singular noun into a plural. Sometimes we have to add letter S so many times if we want to convert
a singular noun, to make it a plural noun, what we have to use? We have to add s, sometimes s, sometimes es. Okay. Some of the examples are also given. When to use s and when to use es. Okay. For a single, here it is shown B. B, you know na? Supply. B. It's a single. B is a single word, single noun. If we want to make it plural noun, plural, as I said you, the definition that more than one. Okay. So what we have to use here? We have to add s. When we are adding s, it becomes bees. How we pronounce? Bees. S is there, so it becomes plural. In a singular, bee, and in a plural, bees. Same way, window, windows. Understood? Window is singular and windows is a plural. Now, how to add es? Fox is a singular noun. Foxes is a plural noun. And especially for which words, for which singular nouns, we have to add es. Understood? I will explain you. ऐसे कौन से सिंगुलर नाउन है जिसको es यूज करना पड़ता है? कौन से नाउन्स हैं? कौन से सिंगुलर नाउन्स हैं जिसको es यूज करना पड़ता है? Those are singular nouns which ends with a letter double s, sh, ch और x. ऐसे कुछ सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड करते हैं डबल एस से, सी एच से, एस एच से और एक्स से. ऐसे सिंगुलर नाउन्स को हम ई एस यूज करते हैं. मतलब ऐसे सिंगुलर नाउन को हम लोग ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? So here you see, as I said you, examples are given. Fox. Here in the fox also you can see the fox word ends with a letter X. So what we have to use here? ES. सिर्फ S यूज नहीं कर सकते. मैंने बताया आपको सिंगुलर नाउन के कुछ एंडिंग लेटर्स रहते हैं जो स्टार्ट जो एंड करते हैं एस एस से, सी एच से, एस एच से और एक्स से. ऐसे सिंगुलर नाउन्स को हम ई एस यूज करके प्लूरल बनाते हैं. लाइक फॉक्स, so foxes. Bench, benches. Understood? Here we can also add es to singular nouns that end in o. As I said you, that singular nouns that ends with ss, sh, ch and x. But some more singular nouns are there that ends with o. For those singular nouns also we can use es to convert them in plural nouns. Okay? Understood? This is the exercise which is given. Add s and es to these nouns. To these nouns. Some are given. Let's do. Okay? Let's do this exercise.
plate. One example is given, so we write it as plates. Okay. Second one, buffalo. So what we are going to write? What which letter we are going to add to buffalo, as the buffalo ends with O. So here it is given for some singular nouns that ends with O. So we have to add es to make it plural noun. Okay, so here buffalo, last letter is O. So what we have to use here? Es, buffaloes. What you are going to use here? Es. So it becomes a plural, buffaloes. Glass, you see, double S. So what you are going to use? Es. Glasses, GLA double S ES. Again, spider. What you are going to use? Spiders, only S. SPIDERS. Understood? Rose. Okay. So what you are going to use? S. ROSES. Roses. Here again, box. The box, X letter, last letter is X. So what we have to put here? ES. What we are going to use here? What we are going to add here to make it a plural noun? ES. हम इसमें ES use करेंगे. So the plural form of box is boxes. BOXES. Now bush. What you have to write? What you are going to add? ES. Bushes. ES. Okay. Here CH. So what we use? ES. Peaches. PEACHES. Again, brush. Ends with SH. Look at the picture also. Ends with SH. So which we have to add ES. So BRUSHES. Brushes. O. Last letter is O. So mangoes. MANGOES. Latch. Latches. LATCHES. Street. STREETS. सिर्फ हम इसमें S यूज करेंगे, क्योंकि S कहाँ यूज करते हैं? जो नॉर्मल वर्ड्स हैं उनको सिर्फ हम S यूज करते, उनको प्लूरल बनाने के लिए. सिंगुलर, स्ट्रीट सिंगुलर है, प्लूरल बन जाएगा स्ट्रीट्स. लेकिन कुछ सिंगुलर नाउन्स को हम ऐड करते हैं ES, जो एंड करते हैं लेटर डबल S से, SH से, CH से, X से और O से. तो उन जो वो वर्ड एंड करते हैं ये SS, SH, CH, X और O से, उनको हम ऐड करते हैं प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ES. आया समझ में बच्चों? So this I explain you singular and plural, page number 11. Okay. Now here some more forms are given in page number 12 also. I'll tell you. Okay. Here are some more ways of making plural nouns. As we learned using S and ES. Some more nouns are there which ends with F and FE. और सिंगुलर नाउन्स हैं जो एंड करते हैं F से,
एंड FE से, तो उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको कभी सिर्फ F भी लगता है, FE लगता है, कभी VES लगता है। F और FE से जो वर्ड लास्ट में लेटर F और FE से एंड करते हैं, उनको प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए हमको VES लगता है, उनको प्लूरल फॉर्म में बनाने के लिए। Some singular nouns that ends with letter F and FE, we have to add VES to make them in a plural form. Example, leaf. So we are using LEAVES. Leaf is a singular noun and leaves is a plural noun. Wife is a singular noun. Wives. We have to spell also wives. WIVES. The plural form of wife is wives. Some more singular nouns ends in Y. So there we have to change to make it into a plural noun. The word which ends with Y, we have to use IES. We have to use IES. जो सिंगुलर नाउन एंड करता है Y से, तो उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए IES लगता है। लाइक बेबी, बेबी सिंगुलर नाउन है और बेबीज मतलब बेबी को सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाना है, तो हमको IES यूज करना पड़ता है, देन इट बिकम्स बेबीज। ओके, सम नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए वोवेल्स यूज करने पड़ते हैं। वोवेल्स कौन से हैं हमारे? AEIOU। हमको वोवेल यूज करने पड़ते प्लूरल बनाने के लिए। कंफ्यूज नहीं हो जाओ, आपको वन बाय वन मैं वापस से बता रही हूँ। कुछ वर्ड्स सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए हमको सिर्फ S यूज करना पड़ता है। लाइक मैंने बताया, बी सिंगुलर है, बीस प्लूरल है। कुछ नाउन जो एंड करते हैं, कुछ सिंगुलर नाउन जो एंड करते हैं, कौन से वर्ड से? SS से, CH से, SS से, O से और X से। ऐसे सिंगुलर नाउन्स को हम प्लूरल में चेंज करने के लिए ES का यूज करते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए जो सिंगुलर नाउन एंड करते हैं F और FE से, तो उनको हमको VES यूज करना पड़ता है। कुछ सिंगुलर नाउन जो एंड करते हैं Y से, उनको प्लूरल में चेंज करने के लिए हमको IES यूज करना पड़ता है। कुछ नाउन्स को प्लूरल में चेंज करने के लिए हमको वोवेल्स यूज करने पड़ते हैं जो ऑलरेडी वोवेल में रहते हैं। जैसे कि सिंगुलर मैन तो मेन, वुमेन तो वुमेन, फुट को फीट, टूथ को टीथ, गूस को गीस, माउस को माइस। ये सारे चीज हमको सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऑलरेडी ये इनमें जो वोवेल यूज किया है वो दूसरा वोवेल चेंज करना पड़ता है। जैसे कि मैन, MAN, A भी एक वोवेल है
लेकिन हम उसको प्लूरल बनाने के लिए MEN बनाते हैं। फुट उसको बनाते हैं फीट, वुमेन वुमेन, टूथ टीथ, गूस गीस, माउस माइस। अंडरस्टूड? वोवेल से वोवेल चेंज करते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। सम नाउन्स सिंगुलर एंड प्लूरल हैव द सेम फॉर्म, उनको कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। कुछ ऐसे हैं वर्ड्स जिनको हम सिंगुलर भी वैसे ही है और प्लूरल भी वैसे ही है, सेम, सिंगुलर ऑल्सो सेम एंड प्लूरल ऑल्सो सेम। लाइक शीप, शीप सिंगुलर ऑल्सो शीप, आप उसको शीप नहीं बोल सकते, शीप शीप, डीर डीर ओनली। ओके, वी कांट चेंज them in a singular and plural, it remains the same. Understood? So here exercise is given. Write the plural forms of these nouns. Okay, plural forms are given. Okay, I'll explain you, but I'll tell you. Lorry, the lorry is a singular noun. In a plural, lorries. Okay, I'm telling you the answers fast. Okay, you have to write it as it is a exercise, but don't worry, I'll tell you. Shelf, shelf, SHELVES. Knife, knives, KNIVES. Man, MEN, men, plural. Goose, geese, GEESE. Sheep, sheep remains same, sheep. City, okay, here cities, CITIES, because the word city ends with letter Y, so we have to add IES. Loof, loose, LOAVES. Okay, pony, ponies, PONIES. Family, families, FAMILIES. Story, stories, STORIES. Life, lives, LIVES, because this word ends with FE. As I explained you, the singular noun which end with F and FE. So if we have to change it into plural form, so we have to use VES. So the live, it becomes lives, LIVES. Thief, okay, thief, thieves, THIEVES. Mango, MANGOES. The plural form, plural form of mango is mangoes, MANGOES. Mouse, mice, MICE. Deer remains same, deer. Okay, no singular and plural changes in deer and sheep. Okay, elf, so elves, ELVES. Tooth become teeth, only we have to change the vowel. Wolf, it is wolves, WOLVES. Calf, so it is a calves, CALVES. Calves, okay. So this way we finished this page number 12 also. Students, I hope better you understood this singular and plural. Okay, note it down, do this exercise, page number 11 and 12 in your grammar book also. Okay, so thank you all of you. Take care. Have a nice day.